Good afternoon, everyone. Welcome once again to our expiry live session for natural gas today. So myself Durgesh Ugawekar, your commodity analyst. So आज we are here for the natural gas options expiry. So natural gas का जो भी price action रहेगा आज के दिन के लिए and what trades we could take that we will go through. So we will just quickly go through the charts now. Okay, so this is hourly chart of natural gas, MCX natural gas. अगर natural gas का भी जो price current चल रहा है that is at 305.70 and अगर हम लोग देखेंगे कि एक अराउंड 315 के आसपास ये गया था कल एंड वहाँ से हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग देखा है एंड अगर हम लोग ये अभी करंट चार्ट पैटर्न देख रहे हैं ये अर्ली चार्ट पे इट्स काइंड ऑफ अ वेज पैटर्न तो एक ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है इस पे एक सपोर्ट ले रहा है एंड थोड़ा एक लोअर टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग देखते हैं एज वी आर ट्रेडिंग फॉर द एक्सपायरी तो लोअर टाइम फ्रेम में विल लुक एट लोअर टाइम फ्रेम पे भी एक सपोर्ट है तो वी आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी ट्रेड राइट नाउ बट आई विल आस्क यू ऑल टू कीप 305 कॉल एंड 305 पुट ऑन रडार 305 का जो कॉल है दैट इज ट्रेडिंग एट अराउंड ₹3 एंड 305 का जो पुट है दैट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 2.70 so natural gas ka lot size is 1250 MMBTU. So on ₹1 change, you will have a profit or loss of around 1250. So 305 का कॉल लेंगे या 305 का पुट लेंगे दैट वी विल डिसाइड इन नेक्स्ट 5 और 10 मिनट्स और सो अगर ये लेवल ब्रेक होता है 304.50 के नीचे देन वी विल गो फॉर पुट एंड अगर दिस कैंडल ब्रेक्स ऑन द हायर साइड और अगर 307 के ऊपर चला जाता है then we will go for the call side. But as of now, we are not taking any trade. ओवरऑल अगर हमने बात की रहे कि लास्ट जो हमने एक्सपायरी देखा था दैट वाज सिल्वर मिनी सो सिल्वर मिनी के टाइम पे एक्सपायरी के टाइम पे भी वी हैड सजेस्टेड अ नेचुरल गैस बाय ट्रेड नेचुरल गैस वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 300 302 at that time and it went up to 315 yesterday so 315 तक also we had a positional official call which we booked yesterday at around 315. So as of now, price थोड़े retrace हुए on the lower side. Overall trend has been upside only, but हमें आज expiry के लिए trade ढूंढना है. So expiry won't be there tomorrow. आज का जो trend रहेगा that will be more important for us. So देखते हैं ये कौन से साइड ब्रेक होता है. 305 का कॉल 305 का पुट हम लोग रडार पे रखेंगे. And for those who are trading in the option strategies, so एक ऑप्शंस डेटा में शेयर करता हूँ आपसे कि अभी करंटली अगर आप एमसीएक्स के साइट पे जाके देखोगे देन इफ यू ऑब्जर्व द ओपन इंटरेस्ट इन नेचुरल गैस सो 310 के जो कॉल्स है उसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है एंड 300 के जो पुट्स है उसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है सो इमीडिएट रेजिस्टेंस इज 310 एंड इमीडिएट सपोर्ट इज एट 300 सो ये 300 से 310 के रेंज में घूमने के ज्यादा चांसेस है आज के दिन में सो इफ यू आर एन एग्रेसिव ट्रेडर एग्रेसिव ऑप्शन सेलर सो आई वुड रेकमेंड कि 310 का जो कॉल है दैट इज ट्रेडिंग एट 1.30 एंड 300 का जो पुट है दैट इज ट्रेडिंग एट ₹1.05 सो ये जो कंबाइंड प्रीमियम है दैट इज एट अराउंड 2.35 और 2.40 समथिंग तो ये 2.40 का प्रीमियम आप सेल कर सकते हो एंड आप इसमें स्टॉप लॉस रखना 2x तो मैं सजेस्ट करूंगा 4.80 और ₹5 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो सो इफ नेचुरल गैस is not crossing about 310 today or it's not going below 300 today then this premium combined premium is likely to go to zero so this strategy is short strangle so short strangle में आप ट्रेड कर सकते हो 310 का कॉल रहेगा 300 का पुट रहेगा जिसका कंबाइंड प्रीमियम ₹2.40 चल रहा है so that will be a strategy for option sellers option buyers के लिए yet I have not recommended any trade we will wait for some time अगर कोई साइड में breakout या breakdown आता है in the next few minutes then we will go for the trade meanwhile other commodities we will look at जैसे last silver mini का जो expiry हुआ था वो टाइम पे we had discussed कि gold and silver are looking bearish so if you look at gold and silver charts we have been observing them since last many expiries and I have been continuously saying कि gold और silver में एक reversal pattern form हुआ है bearish reversal and it's going to go down so last 4 से 5 weeks से we have seen continuous red candles in gold so
इट हैज टेकन सपोर्ट समवेयर नियर अराउंड 4000 लेवल्स. 4000 का जो मार्क है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है ऑन द स्पॉट गोल्ड. वहां पे एक बार सपोर्ट लिया गया था गोल्ड में, बट स्टिल वी हैव नॉट सीन एनी ग्रीन कैंडल इन द लास्ट फ्यू वीक्स. सो देखते हैं ये वीक कैसे रहेगा. ऑल्सो वी हैव गोल्ड मिनी ऑप्शंस एक्सपायरी इन द कमिंग 2 days. 26th वी हैव ऑप्शंस एक्सपायरी फॉर गोल्ड. तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी देखने लायक होगा कि अगर गोल्ड में कुछ ब्रेकडाउन आता है तो आप नेक्स्ट 2 to 3 days के लिए ऑप्शंस गोल्ड के भी ट्रेड कर सकते हो. सो करंटली जो गोल्ड मिनी का प्राइस चल रहा है, दैट इज ट्रेडिंग एट 144,680 एंड स्पॉट गोल्ड इज ट्रेडिंग एट 4129. सो अकॉर्डिंग टू दिस वीकली चार्ट इट्स स्टिल बेरिश, but as you all know, currently the commodity market is purely linked with the news. So news that's coming out from Trump or related to the US Iran that thing is going on. US Iran का जो भी चल रहा है, उसके रिगार्डिंग जो भी न्यूज आते हैं उसके उसको ज्यादा रिएक्ट कर रहा है आजकल गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइजेस प्लस क्रूड के प्राइजेस. Also crude we had discussed, crude में बहुत bearish move लग रहा है last expiry. Since May expiry we have been discussing कि crude एक bearish move में है. So this is what has happened since May expiry. यहाँ पे prices थे जो हमने देखे थे May के expiry के टाइम पे, and वहाँ से अभी prices almost more than 2000 points नीचे आ चुके हैं. So in crude also we have seen continuous bearish candles on the weekly chart. सो ये ट्रेंड और भी नीचे जाने के चांसेस है, लाइक और भी ये ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस है ऑन द डाउन साइड. सो वी हैड डिस्कस की क्रूड में जो प्री ब्रेकआउट एरा था, जो मार्च में जो न्यूज आया था, प्री ब्रेकआउट लेवल था, वहां तक आने के चांसेस है. दैट कम्स एट अराउंड 6000 5500 का लेवल है. तो वहां तक आने के अभी भी चांसेस है क्रूड में इन नेक्स्ट फ्यू डेज. सो लेट्स कमिंग बैक टू द नेचुरल गैस, इफ वी आर एबल टू फाइंड एनी good trade for the day. Okay, so अभी भी कुछ मूवमेंट है नहीं, बट आई वुड से कि आप 310 का कॉल एंड 300 का पुट सेल कर सकते हो फॉर ऑप्शन सेलर्स. दैट विल बी द ट्रेड एज ऑफ नाउ फॉर द डे, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OI इन 310 कॉल्स एंड 300 पुट्स. सो ये लेवल इजीली ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है आज, 310 ऊपर में और 300 का लेवल नीचे में, as long as there's no strong news that's going to impact natural gas prices. Let's see. For option buyers we will wait for the level of 307 to cross. 307 का level अगर cross होता है then we will try to take a trade and we will keep this as a stop loss. 304 का हमारा stop loss रहेगा अगर 307 के ऊपर जाता है तो. According to that we will plan our option trade, but as of now we will wait for it. And if you are planning to trade in other options like gold, like I said, we have gold mini expiry also in the coming Friday. So you can look for the puts on the put side. अभी 1,45,000 के puts आप देख सकते हो, तो 1600 रुपए चल रहा है currently. अगर आप gold mini का प्राइस देखो, that is trading at 144,540. So according to expiry, if I'm expecting it's gonna go down, so आप 1,45,000 1,44,000 के भी puts देख सकते हो. 1,44,000 का पुट 1200 रुपए चल रहा है. So as price keeps going down on in the next 2 or 3 days, if we see a gap down in the gold prices, then this put can go to 2,000 or 2,500 also in the next coming 2 days. So if someone wants to go with the gold options as per the coming expiry, can go with the 1,44,000 put, which is currently trading at 1,200. So this will be a positional trade for 2 to 3 days till expiry. Coming back to natural gas, it is not yet moving. 306 का भाव चल रहा है. एक छोटा सा सपोर्ट लिया हुआ है, एक बाउंस बैक आया है, बट उसका कंफर्मेशन होना अभी बाकी है. 307 के ऊपर जब प्राइसेस जाएंगे देन वी कैन से कि प्राइसेस आर सस्टेनिंग. सो 307 के ऊपर ही वी विल लुक फॉर द बाय ट्रेड. लेट्स वेट फॉर सम टाइम. Otherwise, if we are not sure about the breakout or breakdown, we won't be taking any trade. As you all know, no trade is also a good trade. It will save you of your capital, save you of your time, save you of your stress. So let's wait for some time. And coming back to crude oil, अगर crude oil, if you are looking to trade in crude oil में जैसे मैंने बताया बहुत बड़ा फॉल आ चुका है, बट आज का अगर आप डेली कैंडल देखोगे क्रूड में, सो क्रूड हैज मेड अ लो ऑफ अराउंड 6903. वहां से अभी प्राइस ऑलमोस्ट 150 रुपए रिकवर हो चुके हैं. 7030 7040 के बीच में चल रहा है. ऑलमोस्ट 150 रुपए रिकवर हो चुके हैं प्राइसेस. एंड इफ वी लुक एट द 15 मिनट चार्ट, दैट विच वी प्रीफर फॉर
द इंट्राडे ट्रेडिंग. सो वहां पे अगर आप देखोगे तो एक प्राइजेस आर सस्टेनिंग एज ऑफ नाउ, तो एक यहाँ पे बेस बन चुका है. बट एज लॉन्ग एज दिस लेवल इज नॉट ब्रेकिंग, अगर आपको दिखता है कि 7060 का लेवल अगर ब्रेक होता है आज के दिन में, देन आई वुड रेकमेंड यू टू गो फॉर द लॉन्ग ट्रेड. 7060 के ऊपर आप बाय कर सकते हो. सो यू कैन लुक फॉर द ऑप्शंस ऑफ 7100 और 7000 ऑल्सो इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर इंट्राडे. अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है एंड अगेन इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन, तो एक लेवल ये रहेगा 6970 6960 के आसपास. तो 6960 6970 ये जो लेवल है, ये एक बड़ा रेंज है अभी 6960 टू 7060. ये लेवल के बीच में ही आपको, ये लेवल के इधर साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद ही आपको क्रूड में ट्रेड लेना है आज के दिन. सो एज ऑफ नाउ crude is also sideways, NG is also sideways, gold is also sideways, but gold you can trade for the next 2 days. जैसे मैंने बताया कि गोल्ड मिनी का 1,44,000 का पुट ऑप्शन है, that you can trade for next 2 days. Let's come back to the natural gas chart. 305.80 चल रहा है अभी. So if 304 का भी अगर लेवल ब्रेक होता है 304.50 का, then also we'll go for the put option of 305, but it's not yet confirming, the price is not yet confirming our bias, so we will wait for some time. But gold में थोड़ा मूव आ रहा है, गोल्ड थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है. so if you want to go, अगर कोई कुछ ट्रेड नहीं मिल रहा है नेचुरल गैस में, you can go for gold also as it's approaching near the expiry. So it is as good as the expiry trade only because 2 दिन ही बाकी है. सो आप 1,44,000 का पुट बाय कर सकते हो, विच इज ट्रेडिंग एट 1230 नाउ. 1220 वगैरह चल रहा था, अभी 1230 1240 हो चुका है. गोल्ड वाज एट 4130, नाउ इट्स एट 4125 ऑन द स्पॉट. नेचुरल गैस जैसे मैंने बताया 307 के ऊपर ही वी विल गो लॉन्ग, बट 307 का लेवल अभी ब्रेक नहीं हो रहा है. अगेन वी आर लाइकली टू सी अ रेड कैंडल अगेन. सो अगर ये रेड कैंडल इसके नीचे चला जाता है, देन वी विल गो फॉर द पुट साइड. And option sellers I have already recommended, they can go short on 300 put and 310 call. So only aggressive option sellers I would recommend to go with this trade. Those are aggressive option sellers can go with this short triangle and keep the stop loss of 4.80 on the combined premium. 305.30 चल रहा है. Gold is at 4125 on the spot. हमारा ऑप्शन जो है that is at 1240. सो अगर गोल्ड 4080 4070 वगैरह जाता है, विच इज 1% मूव आई वुड से. सो 1% मूव अगर इसमें आता है, देन 1,44,000 का जो ये पुट है, दैट इज लाइकली टू गो अबाउट 2000. सो 2000 के ऊपर ये जाने के चांसेस है, विच इज सो गोल्ड मिनी का अगर लॉट साइज आपको पता है, विच इज 10. सो पर रुपी चेंज इज 10 इन दिस. सो 800 रुपये अगर बढ़ता है, 8000 रुपीज का प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट हो सकता है. योर स्टॉप लॉस इन दिस ट्रेड, सो योर स्टॉप लॉस विल बी इन दिस ट्रेड विल बी दिस फॉर अ पोजिशनल ट्रेड 600. सो 600 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 600 रुपये का स्टॉप लॉस है. इफ सो इफ यू लूज दिस ट्रेड, you will be losing 6,000 rupees per lot. Also coming to the risk management, I would recommend not to risk more than 2% of your capital on a single trade. So ये single trade पे आपके 2% से ज़्यादा capital risk नहीं करना है आपको. Also if we find any another trade, उसमें भी आपको in natural gas, उसमें भी आपको more than 2% of your capital risk नहीं करना है. So that is the proper risk management rule. Okay, so now natural gas is trading at 305.30. अभी तक इसमें कुछ मूव नहीं आ रहा है. We will wait for the confirmation. Confirmation के बिना we will not take any trade. 310 का कॉल एंड 300 का पुट जो मैंने सजेस्ट किया था, which was trading at around 2.40 premium. Now that premium has dropped to 2.20 I would say. So 20 रुपए का उसमें थोड़ा सा प्रीमियम डिके हुआ है. सो एज वी अप्रोच टुवर्ड्स एक्सपायरी, अगर प्राइस मूव ही नहीं करता है कोई डायरेक्शन में, ये प्रीमियम जीरो होने के चांसेस है. दैट्स व्हाई आई हैव राइटली सजेस्टेड द ऑप्शन सेलिंग ट्रेड फर्स्टली, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा आज. अगर आता भी है तो विच इट विल गो टुवर्ड्स 302 303 on the downside, and on the upside if it breaks 307 then it will go to 308 309. बस इतना ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. 310 के ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस बहुत कम लग रहे हैं. And if there's a move which breaks either of these levels, then I would suggest कि आप aggressively वो साइड में ट्रेड कर सकते हो. अगर 310 का लेवल ब्रेक होता है
uh, because of any news, any uncertainty. So markets are always uncertain. So if because of any uncertainty, if 310 का level break होता है, then I would suggest you buy the 310 call for the रिमेनिंग टाइम ऑफ एक्सपायरी. अगर इवनिंग में 7 बजे के बाद वगैरह कुछ न्यूज आता है 310 ब्रेक होता है, देन इट विल बी अ काइंड ऑफ अ हीरो जीरो ट्रेड फॉर यू. 310 के ऊपर अगर जाता है एंड इतने बड़े आई वुड से इतना बड़ा ओआई होने के बाद भी 310 के ऊपर जा रहा है, तो you will get a move of minimum 5 to 6 rupees on the higher side. Also, if it breaks 300 rupees on the lower side, you will get a move of 5 to 6 rupees on the lower side. So it will be a good expiry trade if we have a momentum above 310 or below 300. But as of now, we are expecting कि 304-50 अगर ब्रेक होता है तो 302 301 के आसपास ये एक बार टच करेगा. So for that, we are observing 305 call और 305 put. So 305 का पुट लेना है या 305 का कॉल लेना है, दैट वी विल डिसाइड इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. अगर ये कोई भी लेवल ब्रेक नहीं होता है, सो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू टेक एनी ट्रेड ऑन द ऑप्शंस बाइंग साइड. Otherwise, your options will go to zero, will expire worthless if there's no movement in the natural gas, there's no momentum in the natural gas in the evening session. So better to go with the option selling trade that I have recommended, which is 310 call and 300 put. ओके सो जो हमने गोल्ड का ऑप्शन सजेस्ट किया था विच इज़ 1,44,000 विच इज़ करंटली ट्रेडिंग है 1250. सो गोल्ड का एक्सपायरी है, गोल्ड मिनी का एक्सपायरी इज ऑन फ्राइडे, बट वी आर टेकिंग इट एज गुड एज एक्सपायरी टुडे ओनली बिकॉज 2 ही दिन बाकी है. सो एंड गोल्ड इज इन गुड मोमेंटम ऑन द डाउन साइड. सो स्टिल आई फील कि गोल्ड और नीचे जा सकता है. दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग 1,44,000 का पुट आप बाय कर सकते हो. वी सजेस्टेड एट 1220, नाउ इट्स एट 1257. सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम. अगर आज नेचुरल गैस में नहीं मूव मिल रहा है, आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो. क्रूड अल्सो वी सॉ कि 7060 ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे 6960 इज द सपोर्ट. सो उसमें भी अभी तक कुछ मूव नहीं आया, बट 7060 के अबाव आई एम एक्सपेक्टिंग अ मिनिमम मूव ऑफ 100 और 150 पॉइंट्स अबाव 7060. एंड अगर 6950 6960 के नीचे चला जाता है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूव टुवर्ड्स 6800 6750. सो लेट्स वेट एंड वॉच कि कौन से साइड में कौन सा कमोडिटी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है, देन ओनली वी विल गो फॉर द ट्रेड. कमिंग टू द बेस मेटल्स पैक, अगर आप कोई बेस मेटल्स ट्रेड करते हैं तो लेट्स लुक एट द चार्ट ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम अगर हम देखते हैं ऑन डेली चार्ट, इट हैज गॉन डाउन फ्रॉम द टॉप, but it's little bit taking support near around 340 342 kind of zone, but still ये इसमें it's a no trade zone as of now for base metals pack. अगर base metals pack हम लोग देखेंगे तो इसमें no trade zone है. यहाँ से बाउंस भी होने के चांसेस है, यहाँ से ब्रेकडाउन भी आने के चांसेस है, तो वी नीड टू वॉच वेयर इट गोज ऑन. अगर हम जिंक का जो एलएमई का चार्ट है, एलएमई के सीएफडी चार्ट है वो देखते हैं, उसमें भी कुछ लाइक कंफर्मेशन है नहीं. it's forming a bearish reversal, but there is no confirmation yet. So we will wait for base metals pack to confirm our price action, confirm our bias, then only we will go for trade. So no trade from my side on base metals pack. So let's look at the natural gas once again. 15 minutes chart. Okay, it's still trading at 30550. So I guess we are not going to get any buy like option buying trade today within the session, but if it breaks about 307, you can try for the option buying trade towards 310 target, 309 310. And if it breaks about 310, it is likely to go aggressively towards 315. So that will be the buy side level for the day. And if it breaks below 304, 304 304 के नीचे अगर ब्रेक होता है, then it's likely to go towards 300 and as there is a support near 300 के पास बहुत बड़ा सपोर्ट है, so 300 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है. बट अगर 300 भी ब्रेक कर देता है, then I would ask you to go aggressively short for the targets of 295 294 in the evening session. बट अभी अगर हमने ऑलमोस्ट 2 कैंडल देख लिए 15 मिनट के, कुछ भी मूवमेंट है नहीं. So we will wait for next 5 minutes. Let's see if we get to punch the trade during the session. Otherwise, I will give you the levels and we will move for the day.
Meanwhile, gold is also trying to go down. 4124 4125 का लेवल चल रहा है. Our 1,44,000 option is trading at 1238. We recommended at 1220. ओके एंड 310 का कॉल 300 का पुट जो है दैट कंबाइंड प्रीमियम इज नाउ एट अराउंड 2.20 आई वुड से. ओके 2.20 चल रहा है अभी. 1.20 है और ₹1 चल रहा है. 2.20 2.10 चल रहा है. सो 2.40 से 2.10 आ चुका है. In the last 15 minutes only the premium decayed by almost 20-25 पैसा. सो अगर ये ऐसे ही चलता रहा प्राइस एक्शन तो इवनिंग तक ये 50 पैसा 30 पैसा 40 पैसे तक ये प्रीमियम आ जाएगा. एंड इफ दिस प्राइस एक्शन कंटिन्यूज टिल इवनिंग इन द till at around 8 o'clock 9 o'clock or till market closing, then this premium is likely to go to zero, this combined premium which I suggested. 310 call 300 put. Okay, meanwhile गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं. स्पॉट गोल्ड 4122 आ चुका है एंड हमारा जो 1,44,000 का पुट दैट वी सजेस्टेड फॉर दिस एक्सपायरी, जो गोल्ड मिनी का एक्सपायरी इज ऑन फ्राइडे, सो वो अभी 1263 चल रहा है. वी सजेस्टेड एट 1220. 1263 1268 चल रहा है. सो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो. इफ यू वांट टू ट्रेड इन गोल्ड मिनी यू कैन बाय 1,44,000 का पुट. एज ऑफ नाउ नेचुरल गैस में कोई ऑप्शन बाइंग ट्रेड नहीं बना है, सो वी विल वेट and I will give you the levels. We won't be there throughout the expiry till the evening live, so I will give you the levels. Once it crosses 307 you have to buy 305 ka call, and once it breaks below 304.50 you have to buy 305 ka put. These are the two trades for you. And अगर 310 के ऊपर एग्रेसिवली ब्रेक होता है देन 5 से 6 रुपए का मुंह आने के चांसेस है. सो यू कैन गो फॉर 310 और 315 कॉल्स ऑल्सो. काइंड ऑफ 0-0 कॉल्स यू कैन डू. एंड इफ 300 के नीचे अगर ब्रेक होता है तो देयर इज अ हाई चांस कि इट विल रीच टू 295 294. तो आप एग्रेसिवली पुट्स बाय कर सकते हो इफ इट ब्रेक्स बिलो 300. बट एज ऑफ नाउ 307 के ऊपर 310 तक के टारगेट के लिए आपको ट्रेड करना है. एंड 304 के नीचे आपको 300 तक के टारगेट के लिए ट्रेड करना है. सो दैट इज द ओनली ट्रेड फॉर द डे. एंड ऑन द ऑप्शन सेलिंग साइड 310 का कॉल और 300 का पुट इज व्हाट आई हैव रिकमेंडेड. And on the gold mini options with the expiry is on Friday. The Friday market will be half day, so MCX will open at around 5 p.m. so it will be a half expiry day. So that's why I'm suggesting now ki if we want to play this move for next 2 days, you can go for 1,44,000 ka put which is trading at 1250 now. Okay, सो 1,44,000 का पुट आप बाय कर सकते हो अगर ये ऑप्शन अगर स्पॉट गोल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स 4080 4070 इन नेक्स्ट few hours. So this 1,44,000 पुट इज लाइकली टू गो अबाउट 2,000 एंड इसमें स्टॉप लॉस आपको 600 रुपए का रखना है. सो ऑफ कोर्स यू हैव टू ट्रेड स्ट्रिक्टली विद द स्टॉप लॉस. I would suggest not to go with the 0-0 kind of trades. Go strictly with the stop loss and of course follow the risk management. So I think that's it from my side today for natural gas expiry. Of course, we'll try to cover other expiries in the coming sessions. For gold mini, I have suggested you the trade today. So that's it from my side today. Thank you all for joining. Have a happy trading session to you all. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.